टॉनी मॉरिसन डिपिक्शन ऑफ अर्बन लाइफ इन जैज, कि उसने अर्बन लाइफ जो है वो किस तरह से दिखाई है इन द जैज। ठीक है, अर्बन लाइफ यानी कि सिटी लाइफ उसने किस तरह की दिखाई है। रूरल लाइफ जो है वो विलेज लाइफ को कहते हैं, अर्बन लाइफ जो है सिटी लाइफ को कहते हैं। द फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिकन सिटी इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टार्क manifestation of hierarchical color divide. Interesting African American novels are replete with images of post-bellum migration of the city and ghettoization of the Niger. अब यहाँ पे क्या है, फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है एक अमेरिकन सिटी की इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, जो कि इज ऑफन कैरेक्टराइज बाय अ स्टार्क मैनिफेस्टेशन ऑफ हायरार्चिकल कलर डिवाइड। ये जो गोरे और काले का एक तजाद है वो दिखाया गया। Interestingly, African American novels are replete with the images of post-bellum migration. ये जो post-bellum migration of the city है, ये उसको शो किया गया है। और ये जो ghettoization of Niger एक्चुअली इनको गुलाम बना लिया गया था अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो वो स्लेवरी सारी डिपिक्ट की गई है। टॉनी मॉरिसन्स जैज पावरफुली कैप्चर्स अ विजन ऑफ एन अर्बन लोकेल in which racial spaces are uh, viscerally demarcated for the blacks through long conditioning, though in reality no physical marker separates the white and black worlds. ठीक है, और यहाँ पे जैज जो पावरफुली कैप्चर करता है एक विजन ऑफ अर्बन लोकल, यानी कि एक सिटी लाइफ को जिसमें जो रेशियल स्पेसेस हैं वो विसरली डिमार्केटेड हैं फॉर द ब्लैक्स थ्रू लॉन्ग कंडीशनिंग। लॉन्ग कंडीशंस हैं उनकी, दो इन रियलिटी नो फिजिकल मार्कर सेपरेट्स द वाइट एंड ब्लैक, लेकिन रियलिटी में कोई फिजिकल मार्कर उनको वाइट और ब्लैक को आपस में अलग नहीं कर सकता। This constitution of difference evidently replicates throughout the cityscape, where both race and class create their respective unit spaces. Diarist takes in problematic because there is nothing to warrant the assumption that the community invested unstinglingly in a consolidated historical voice prior to the urban relocation. Whatever was lost owing to the migration to city has been more than compensated by enormous opportunities it offered for liberal engagement with black individualism and collective group action, as has been superbly delineated in Morrison jail. अब यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो लॉस्ट हुई, whatever was lost इस माइग्रेशन में सिटी के लिए वो क्या थी, has been more than compensated by enormous opportunities. More than compensated by उन enormous opportunities से उसको compensate किया गया। It offered for the liberal engagement, जो कि liberal engagement को offer की गई with black individualism, एक black individualism के साथ और एक collective group action के साथ, as has been superbly delineated in Morrison's death. ठीक है, तो ये यहाँ पे उसकी अर्बन लाइफ को डिपिक्ट किया गया था। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बेटा और